New Oxford Modern English Book, Class 5th, Poem 1, Stopping by Woods on a Snowy Evening, written by poet Robert Lee Frost. Word meaning: darkest evening. Winter evenings are much darker than summer evenings in the United Kingdom and the places closer to the North Pole. जो ठंड के दिनों की इवनिंग होती है वो ज़्यादा डार्क होती है, ज़्यादा अंधकार वाली होती है देन समर इवनिंग, स्पेशली उन जगह पे जो नॉर्थ पोल के पास में है. डाउनी लाइक डॉन, द सॉफ्ट अंडर फेदर्स ऑफ यंग बर्ड. जो छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं उनका जो पंखों के नीचे का जो पोर्शन होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है. फ्लेक, फ्लेक्स स्मॉल पीसेस ऑफ स्नो. बर्फ़, जो पतली पतली बर्फ़ जब ठंड में गिरती है उसके लिए बोला जाता है फ्लेक. हार्नेस, द लेदर स्ट्रैप्स एंड बेल्ट्स यूज्ड टू कंट्रोल अ हॉर्स. घोड़ा गाड़ी में जब घोड़े को रोकने के लिए जो लेदर का स्ट्रैप रहता है, एक लेदर की एक पट्टी रहती है, उसको हार्नेस बोला जाता है. कॉम्प्रिहेंशन. क्वेश्चन नंबर 1, टू whom did the woods belong? The woods belong to someone the poet knew who lived in the village. जो जंगल हैं वो किसी को बिलोंग करते थे जिसे पोएट जानते थे जो विलेज में ही कहीं रहते हैं. Did the rider see a farmhouse? No, the rider did not see a farmhouse nearby. Third question, during which season do you think this event took place? Give a reason for your answer. Answer. This event took place in the winter season as the woods were covered with snow and the lake was frozen and it was also snowing heavily. ये जो हो रहा है पूरा इवेंट वो विंटर सीजन में हो रहा है क्योंकि हर जगह बर्फ़ छाई हुई है. How did the horse signal that he wanted to move on? The horse signaled that he wanted to move on by giving his harness bells a shake. अपने हार्नेस बेल को हिला के हॉर्स से सिग्नल दे रहे थे कि उसे आगे बढ़ना है. What do you think the rider stopped by the woods? The rider probably stopped by the woods to watch the snowfall and admire the beauty of the nature. Why was the horse puzzled? The horse was puzzled because his master had stopped in the middle of the woods during a snowfall and there was no farmhouse near and it was the darkest evening of the year. Where do you think the rider was going? The rider was going back to his village to fulfill the promises done by him to other people. Answer the following question. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. Who is the he the poet is speaking about? The poet is speaking about the horse. What is a harness? The harness means the leather strap and belt used to control a horse. What is the possible mistake? The horse thinks that his master has possibly forgotten the way and stopped at a wrong place. Working with word. Suffix. Add suffix y. Suffix यानी पीछे की तरफ word में लगाना. Let's say fluff है तो उसको fluffy y हमने पीछे लगा दिया. Fun, funny, leaf, leafy, sugar, sugary, land, band, bendy. Make sentences on this. Fluffy. My dog is very fluffy. Leafy. The trees are very leafy near to the temple. Add suffix y to the following और जहाँ पे नहीं लगेगा वहाँ नहीं लगाना है. स्पेलिंग चेंज करके. रेड के साथ y नहीं लगेगा. रन, रनी, शेड, शेडी. क्लोज के साथ y नहीं लगेगा. शाउट के साथ नहीं लगेगा. थॉर्न, थॉर्नी. वेट, वेटी. कोल्ड के साथ नहीं लगेगा. स्नो, स्नोई. सन, सनी. लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, नाउन्स एंड वर्ब्स. मेक सेंटेंस वन सेज वर्ब एंड वन सेज नाउन. वी लाइन अप फॉर द असेंबली. यहाँ पे लाइन जो है दैट इज़ वर्ब है. द बेंचेस आर इन अ स्ट्रेट लाइन. यहाँ जो लाइन है दैट इज़ अ नाउन. Surface. The swimmer surfaced after a long time. Yeah, surfaced is verb. The surface of the wall was not at all smooth. Yeah, surface is noun. Water. I water the plants every day. Here water is verb. Everyone should save water. Here water is noun.
The dog scents the danger before us. Sense here is verb. We have 5 sense organs. Here sense is noun. My friend shaped the clay beautifully. Here shaped is verb. Reena likes the shape of the star. Here shape is noun. Taste. I did not taste the food because it was to be offered to good. Here taste is verb. The taste of the food made by my mother is always very delicious. Here taste is noun. Swim. The swimmer swam very fast. Here swim is verb. I like to go for a swim. Here swim is noun. Punctuation. See this paragraph and see the punctuations how they are given. कैन में यहाँ पे सी बड़ा लिखना पड़ेगा, ऊपर अपॉस्ट्रोफी एस लगेगी. कैन यू बी श्योर के बाद आएगा क्वेश्चन मार्क. आस्क्ड माइक. श्योर फिर से कॉमा स्टार्ट होंगे. श्योर ऑफ व्हाट फिर से क्वेश्चन मार्क आएगा. आस्क्ड नीना फिर अपॉस्ट्रोफी एस स्टार्ट होंगे. दैट ही इज़ अस्लीप फिर क्वेश्चन मार्क आके. यू कैन हियर हिम स्नोरिंग. कांट यू क्वेश्चन मार्क. नो कॉमा लगेगा. नो वन यहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क लगेगा. Whispered the mic, are you sure that he does not remember me? Question mark and apostrophe commas जो है वो close होंगे. Now summary of the poem. The poem Stopping by Woods on a Snowy Evening is written by Robert Frost. The speaker in the poem is traveling with his horse through the woods on a snowy evening. जो यहाँ पे speaker है अपने घोड़े पे घोड़ा गाड़ी पे सवार होकर बर्फीले दिन पे जंगल की तरफ चल पड़ते हैं. द पोएट गेट्स इंस्पायर्ड बाय द ब्यूटी ऑफ द नेचर. पोएट जो है उसको नेचर की ब्यूटी बहुत अट्रैक्ट करती है. ही हैज़ अ फीलिंग दैट ही नोज़ द कीपर ऑफ द वुड्स. उस वक्त उनको ये फील होने लगता है कि जो ये वुड्स को जो ध्यान रखता है वो उसे जानते हैं. हु लिव्स इन नियर बाय विलेज. The poet thought that the keeper cannot watch him admiring the forest. और उनको ऐसे लगता है पोएट को कि कीपर नहीं जानते कि मैं कितना फॉरेस्ट को इस वक्त पसंद कर रहा हूँ. The poet says that his horse was thinking why his master has stopped in the dark forest without a farmhouse near. पोएट इस वक्त बोलते हैं कि उनका जो घोड़ा है वो भी यही सोच रहा था कि क्यों उनका जो मालिक है वो इस डार्क जंगल में खड़े हैं जबकि उसके आसपास कोई फार्म हाउस भी नहीं है. दे बोथ वर इन द मिड्स ऑफ द डार्क स्नोई फॉरेस्ट विथ अ फ्रोज़न लेक. वो दोनों उस वक्त जंगल के बीचों बीच खड़े थे जब तेज़ बारिश पड़ रही थी और पूरा फॉरेस्ट बर्फ़ से ढका हुआ था और जो लेक है वो भी बर्फीली हो गई थी. द हॉर्स गिव हिज हार्नेस बेल्स अ शेक टू आस्क हिज मास्टर इफ़ देयर इज़ सम प्रॉब्लम. जो घोड़ा है वो अपनी बेल्ट को हिलाता है, स्ट्रैप को हिलाता है इसलिए क्योंकि वो पूछना चाहता है अपने मास्टर से क्या कोई प्रॉब्लम है. एज देयर वॉज नो वन आउट इन द वुड्स. उस वक्त कोई भी जंगल के में बाहर दिखाई नहीं दे रहा था. ओनली द साउंड्स ऑफ विंड्स एंड स्नो कुड बी हर्ड. उस वक्त सिर्फ हवाओं की आवाज़ और स्नोफॉल की आवाज़ें सुनी जा सकती थी. द पोएट एक्सप्रेसेस दैट द वुड्स आर डार्क. पोएट ये बोलना चाहते हैं कि उस वक्त जंगल पूरा डार्क था, बहुत अंधेरा था. लवली डीप, बहुत सुंदर लग रहा था, काफ़ी डीप. फिल्ड विथ स्नो, पूरी तरीके से बर्फ़ से ढका हुआ था. बट ही कांट वेट एज ही हैज़ ड्यूटी टू परफॉर्म बिफोर गोइंग टू बेड. और वो वहाँ पे और ज़्यादा देर रुक नहीं सकते थे क्योंकि उन्हें कई काम थे जो उनको सोने के पहले करने थे. He has to complete all the tasks and responsibilities. उनको वो सभी अपने टास्क और सभी जिम्मेदारियां निभानी थी सोने के पहले. Annotation. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. Introduction. These lines are taken from the poem Stopping by Woods on a Snowy Evening written by Robert Frost. Central idea. The speaker in this poem is traveling with his horse through the woods on a snowy evening.
The poet was inspired by the beauty of nature, but he could not wait there for a long time as he had to fill his responsibilities. Explanation. The poet continues to stand in the forest and admire the nature. The stanza talks of the quiet environment of the woods where there is only the sound of the snow falling, light and breeze sweeping through the trees. The horse does not want to stop in the dark woods. He shakes his harness bells and reminds his master that he has to move on.